डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम +2 फर्स्ट ईयर बैंकिंग इंश्योरेंस रो गोटे टॉपिक आलोचना करवा फर्स्ट चैप्टर रो। तो इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इंडिया ये विषय आम शिखा आ पढ़ा केमती इंडिया रो कमर्शियल बैंक रो ग्रोथ आउ इवोल्यूशन होता आरंभ होता केमती ग्रोथ होता केमती, तो ता विषय जानिबा। फर्स्ट जानिबा पूर्वर जो मैंने चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर रखु आ बेल आइकन को ऑन रखु। प्रतिदिन क्लास प्रोवाइड करा जिवो आ क्लास रे समस्ते जॉइन हो पारे आ पढ़ी पारे। सबुदिन 4:30 रे क्लास पाइबे। ओके, तो 4:30 फर्स्ट ईयर आ सेकेंड ईयर 5 रे पाइबे 5टारे। ओके, आ जो मैंने अलग पढ़िया चाहते मैथ आमर अकाउंटिंग पिले यहाँ आप्लिकेशन रे क्लास लाइव चलची आप्लिकेशन रे पढ़ाऊँ। जो मैंने आप्लिकेशन रे पढ़ा चाहो बहुत मिनिमम कॉस्ट रे पढ़ी पार। माय ओडिया क्लासेस आप्लिकेशन को डाउनलोड करने। माय ओडिया क्लासेस को डाउनलोड कला पर स्टोर ऑप्शन को जाकि आसेस करें सब्सक्रिप्शन देके बहुत कम फीस पिले अन्य मान निश्चिंत भाव में डेभलप हम आउ से क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबू डिस्कसन कराऊँच सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सबू। ओके, 1 मार्क ठू आरंभ करी लॉन्ग क्वेश्चन पर्यंत सबू पिले पढ़ाऊँच। आउ जदि चाहूच आउ से जॉइन हो पार। ओके पिले, तो आज आम इवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया से विषय रे डिस्कशन करवा पढ़ा। तो देखो जो इंडिजिनियस बैंकिंग जो स्वदेशी बैंकिंग कौच स्थानीय बैंक इंडिजिनियस बैंकिंग ताऊ कहती यहाँ हूँ गोटे ओल्ड ट्रेडिशन इन इंडिया। इंडिया रो ओल्ड ट्रेडिशन प्ले द एविडेंस ऑफ मनी लैंडिंग ऑपरेशन कैन बी ट्रेस्ड इन वैदिक टाइम। ये वैदिक टाइम रो वैदिक जुग रू आरंभ होता है। तो मनु संहिता मन रखे पे मनु संहिता आउ संत मनु कंटेन एनफ रेफरेंसेस रिगार्डिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन विषय रे से बहुत प्रकार रेफरेंस देते। सिमिलरली कौटिल्य शास्त्र had also enough indication about credit operation। क्रेडिट ऑपरेशन कहले बाकी क्रेडिट रे केमती काम चली से समय रे कौटिल्य अर्थशास्त्र देखा मिले। हंडिस द इंडिजिनियस वर्सन ऑफ मॉडर्न बिल्स ऑफ एक्सचेंज मन रख केम टू बी यूज्ड in 12th century which is clearly evidence from writings of few Muslim historians, Europeans, travelers and different state records। The indigenous banker जो मैंने स्वदेशी बैंकर थिले in different forms used to be only player that continued till the Britishers entered into the field through English agency houses established at Calcutta and Bombay, जोटा प्रेजेंटली कहुच्छी कोलकाता आ मुंबई भी कहुच्छी। दिस एजेंसी हाउस पेव द वे फॉर एस्टाब्लिशिंग जॉइंट स्टॉक बैंक्स। एमाने जॉइंट स्टॉक बैंक सब प्रतिष्ठा कले जोटा कौच बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज एस्टाब्लिश 1770 बैंक ऑफ हिंदुस्तान जोटा कहुच्छी आमर जॉइंट स्टॉक बैंक कहा द्वारा यहाँ होता कालकाटा बेस्ड इंग्लिश एजेंसी द्वारा। हाउस व्हिच इज फेल्ड इन 1782 विथ द क्लोजर ऑफ एजेंसी हाउस। जो एजेंसी हाउस क्लोज हो गला कालकाटा एजेंसी हाउस यहाँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान बंद हो गला। ओके, फेल मारला फास्ट बैंकटा। तापरे 3 प्रेसिडेंसी बैंक आसला बैंक ऑफ कालकाटा जोटा कि 1806 रे, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843। ये सब प्रतिष्ठा कराला जो गैप्स ऑफ टाइम रे विभिन्न गैप ऑफ टाइम रे। दिस 3 बैंक्स वेयर हाउएवर मर्ज टुगेदर।
एमाने एकाठी हो गले टू फॉर्म द इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया इन 1921। को बैंक मिसी गले? बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ये तीनटा बैंक मर्ज होइकी इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया जोटा 1921 रे एस्टाब्लिश होइतला। तापरे 1955 रे एको नेशनलाइज बैंक करागला, जहाँ फल यहाँ को कहगला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पिले यहाँ तार हिस्ट्री मन रखियो पिले, इवोल्यूशन ऑफ बैंक, कमर्शियल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, ये तीनटा नेशनलाइज बैंक है, जोटा इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कहला 1921 रे। 1955 रे इटा नेशनलाइज होइकी गोटे ना होगला, सेटा हला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द फर्स्ट बैंक व्हिच वाज एस्टाब्लिश्ड विथ इंडियन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इंडियन ओनरशिप रे रहिला और मैनेजमेंट भी रहिला, वाज द ओथ कमर्शियल बैंक नेम्ड 1881, followed by Ajodhya Bank in 1884, the Punjab National Bank in 1894, ଆଉ Nendugadi Bank 1899, many other banks like Allahabad Bank 1865, Bank of India 1906, Indian Bank 1907, Bank of Baroda 1909, Central Bank of India 1911, ये सबू गोटे पर गोटे आसिले, ओके, एक्जिस्टेंस को आसिले। तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम एक्सपीरियंस ए सीरीज ऑफ क्राइसिस भी बहुत सारा आसी, विटनेस रही फेलुअर नंबर ऑफ बैंक्स साक्षी रही, सो दैट दे पास्ट वर्ल्ड वार, पोस्ट वर्ल्ड वार पर, ओके, पीरियड जो वर्ल्ड वार 1 पर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया was established 1935, मन रखियो पिले, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 रे आछि, टू फंक्शन द अपेक्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू रेगुलेट, ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गुड़ा इटा कहगला फंक्शन रेगुलेट एंड टू कंट्रोल द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। मन रख 1935 रे आस्तिला जोटा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जोटा कि रेगुलेट करुच्ची अदर बैंकिंग सिस्टम, पूरा बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करिवो आ बैंक को कंट्रोल करिवो। तो विथ ए व्यू टू लेइंग ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर साउंड बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री, द बैंकिंग कंपनीज रेगुलेटरीज एक्ट वाज पास्ड इन 1949। बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट सब आसला 1949 रे, एमान ताको कंट्रोल कले, ओके। The entire banking scenario till 1960 however was mostly class based and not mass based, okay, class based asla, not mass based, with little importance रहिला जोटा कि given for growth and the development needs for the country, okay, therefore to make them mass based and development oriented, most specifically to use them as effective instrument for financing priority sector. 20 of the private owned big commercial bank were nationalized, 14 banks in 1969, 6 banks in 1980, the years 1991, also the period thereafter, however proved to be turning point for commercial bank in India. It a turning point thila as fallout effect of recommendation of high level committee headed by Mr. M. Narasimha. This phase is referred as second banking evolution phase. Eta kohandi. Varieties of new reforms were introduced during this phase, the important ones being permission for establishment of private banks, more operational freedom to banks, varieties of other structural reforms, eguda sabu. With the changes made, the banking scene in the country has totally transformed. The banking have not only grown in size, but they have also become a robust by changing their scope, ambit of functioning, and integrating themselves with global changes. एमाने ग्लोबल चेंजेस आणुछंती, पूरा इंटीग्रेट करूछंती बैंकिंग सिस्टम आ होल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करूछंती, ओके। तो या थिला कमर्शियल बैंक रो इवोल्यूशन, आशा करुच्ची समस्त याकू बुझीथिबे, याकू फॉलो हेबे, पढ़िबे, याकू नोट्स बनैबे, तापरे एग्जाम रे लिखिबे, ओके।
तो जो मैंने चैनल को नुआ आसछंती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु। ओके, आज एतिकी प्ले रोचे। जय जगन्नाथ।